हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लई खान और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले देखते हैं कि बूटस्ट्रैप का यूज़ क्या है। बेसिकली बूटस्ट्रैप एक डेवलप्ड लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप बड़ी हाईली रिस्पॉन्सिव इंटरेक्टिव वेबसाइट्स का फ्रंट एंड बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती क्या है। अगर यहाँ पे आप देखें एक फेमस न्यूज़ वेबसाइट है और अगर मैं इसको किसी मोबाइल व्यू के अंदर ओपन करता हूँ, लाइक इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप मोबाइल्स पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल्स की देख सकते हैं, वर्जन्स आ रहे हैं। मैं इसको जो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए ओपन करता हूँ तो ये देखें कि ये वेबसाइट मोबाइल के ऊपर जाके उस हिसाब से एडजस्ट हो गई है। और अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये भी एक वेबसाइट है और इसको मैं अगर मोबाइल व्यू में ओपन करता हूँ तो यू विल सी कि ये अब उस तरह एडजस्ट नहीं हुई, ये मतलब छोटी है। जैसी लुक इसकी फुल पेज के ऊपर थी वैसे ही अब मुझे इसके पढ़ने के लिए मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। आप देखें ये विजिबल नहीं है, ये बिल्कुल छोटे हो गए हैं। हालांकि इस केस में आप देखें तो इसकी नेविगेशन बहुत चेंज हो गई है। It means कि this one is the responsive website and this is the not responsive website. Even in future you will see lots of websites that are not responsive, by the way. But you know, being a developer, you have to make the responsive websites because responsiveness gives the user most better look, और इसके अलावा it gives a better एक्सपीरियंस टू द यूज़र कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करे। बिकॉज उसको अगर प्रॉब्लम होगी यूज़र को तो डेफिनेटली ही विल नॉट विजिट योर वेबसाइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब बूटस्ट्रैप जो है उसमें हमें कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं लिखनी, बनी बनाई एक फ्रेमवर्क है। ट्विटर ने बनाई है 2010 के मिड के अंदर तकरीबन ये बनाई गई, डेवलप की गई। एक डेवलपर थे ट्विटर के, उन्होंने ये डेवलप किया, फिर ओपन सोर्स कर दिया गया। ऐसे ओपन सोर्स मीन एनीवन कैन कंट्रीब्यूट इन दिस और इवन यू कैन सी इट्स कोड। तो यहाँ पे अगर आप विजिट करें तो वेबसाइट बूटस्ट्रैप की ये है getbootstrap.com, ठीक है। और करंटली जो बूटस्ट्रैप का जो है वो 5 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है और 5.1 वर्जन यू कैन सी इन द URL। तो आप बूटस्ट्रैप के ऊपर ये हर चीज़ बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई है। हमें सिर्फ चंद चीज़ें हैं वो यूज़ करनी सीखनी है कि हाउ वी कैन यूज़ द बूटस्ट्रैप इन आवर वेबसाइट। ओके सो अब हम बिल्कुल चलते हैं अपने। ये हमारे पास एक सिंपल पेज मैंने अभी डेवलप किया और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। डॉक टाइप ये बता रहा है कि ये जो है HTML5 के अंदर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। HTML और हेड के अंदर टाइटल होता है हमारे पास माय वेबसाइट, और इसके बाद हमारे पास होती है बॉडी। आफ्टर द हेड वी आर हैविंग अ बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और इफ़ आई राइट समथिंग इन दिस H1, दिस इज़ माई हेडिंग, और आई कंट्रोल एस इट एंड देन आई रिफ्रेश इट, यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे इसके कंटेंट्स आ रहे हैं। अब हम इसी के अंदर अपना बूटस्ट्रैप लगाते हैं। बूटस्ट्रैप लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आना है और इसमें कुछ स्टार्टर टेम्पलेट कोड पड़ा है, आपने वो कॉपी कर लेना है और उसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने कॉपी यहाँ से करना है और पेस्ट कर देना है। मैं सारा कोड नहीं कॉपी करता, जस्ट मैं यहाँ से ये वाली दो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। बट इफ़ यू वांट कॉपी ऑल दिस वन, आई कॉपी दिस वन एंड आई कंट्रोल V8 तो पेस्ट कर देता हूँ। और बाकी ये जितने भी मेरे पास कमेंट्स हैं मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी कमेंट रिमूव कर देते हैं और ये भी कमेंट रिमूव कर देते हैं। लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ हेलो वर्ड एग्जाम्पल और इफ़ यू वांट प्रिंट समथिंग एल्स यू कैन राइट ऑन हेयर। ओके, हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। यू विल सी कि अब हमारी बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अभी सिंपल हमने सिर्फ क्या किया, बूटस्ट्रैप को अटैच किया अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। अभी हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि हाउ वी कैन एंजॉय दिस बूटस्ट्रैप इन आवर वेब पेजेस। ओके सो फाइनली वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स, आपने जो है अपने बूटस्ट्रैप को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लिया। इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। सो इवन यू विल सी इन फ्यूचर वी आर नॉट हैविंग टू मच कोड इन बूटस्ट्रैप। वी विल जस्ट come across this website and we will take the codes from this website, we will copy those code in our website, then we will just change some basics from that code, और हमारे पर्पस के लिए जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर वो चेंजेस होती जाएंगी। ओके फाइनली अब मैं अभी आपको एक इसका जो मैजिक है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का व्हाट इज द मैजिक ऑफ बूटस्ट्रैप। लाइक वी डेवलप अ सिंपल टेबल हेयर। बूटस्ट्रैप जो है वो बिलोंग फ्रॉम CSS। बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या है, CSS है। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करें और मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हाउ दिस इज CSS, तो मैंने ये लिंक किया तो आप देखें ये पूरा कोड है इसका बूटस्ट्रैप का। इफ़ यू वांट सी दिस कोड यू कैन सी इट, बट दिस इज नॉट अ रीडेबल कोड। यू नो, इफ़ यू वांट टू मेक इट रीडेबल देन यू कैन राइट बूटस्ट्रैप कोड
parsed something like this, data parser मे बी। आप यहाँ पे अपना कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और आपका कोड जो होगा, नहीं दिस नॉट अ राइट वेबसाइट मे बी, और एनी हो आप इसको इसमें कॉपी कर लें अपने VS कोड के अंदर और आप इसको ऑटो रीसेट करेंगे तो आपका कोड ये रीडेबल हो जाएगा, बिकॉज ये कंप्रेस्ड फाइल है, ये MIN की फाइल है। मिन फाइल होती है मिनिमाइज्ड फाइल, यू कैन कॉल इट अ कंप्रेस्ड फाइल। दिस इज यूज फॉर प्रोडक्शन, मतलब ये उन वेबसाइट्स के अंदर यूज होती है जो एक्चुअली प्रोडक्शन में जाती हैं। प्रोडक्शन मीन जो एक्चुअली डिप्लॉय होती हैं प्रॉपर, आप कस्टमर उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट का वर्जन होता है डेवलपमेंट वर्जन, आप बूटस्ट्रैप का जो डेवलपमेंट वाला है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके एंड पे शायद मेन नहीं होगा, हम इसके बगैर ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल मेन मैंने मिटाया, तो आप यहाँ पे ये अब कोड जो है रीडेबल है। आप इफ़ यू वांना सी दिस कोड यू कैन सी दिस, बट हमें ये देखिए इतनी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ रही, हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे अपने वेब पेजेस के अंदर। सो Bootstrap एक CSS है और we are having lots of classes in this Bootstrap, so now we are going to call these classes in our HTML pages and we will see the outputs. Okay, so let me write a boilerplate code for a table like t-head, and I'm having a body. Okay, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, th like name, th address, th your story, anything you want to display in your table you can display it, but I'm having an example code, so that's why I'm adding my columns on my desire. Okay, tr td like this is lake, okay, lake, and td, and this is Miyawali, and td this is I don't have any story. Okay, let's make another row for this, just a template. Okay, now we see our table. No, this is not a good, no, this is not very attractive. Let's make it attractive. Just let me remove this one to make it clear. Now see, ये हमारे पास टेबल है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। Now let's make it attractive. जस्ट यहाँ पे मैं एक क्लास कॉल करता हूँ टेबल, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि टेबल जो है कितना इम्प्रूव हो गया, ठीक है। अभी तक इसके अंदर आप देखें काफ़ी चीज़ें भी आएंगी, लाइक इफ़ यू विजिट दिस वन फॉर्म्स मे बी कंटेंट्स टेबल्स, सो यू विल सी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द टेबल। ये सिंपल टेबल है और इसके अलावा मुख्तलिफ क्लासेस हैं, टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, लॉट्स ऑफ थिंग्स, टेबल डेंजर, like if I wanna make something danger mean black, this one is a danger, so you can just call these classes. Like if I wanna make my table like this one, so I will copy this class and I will apply this one on my table, so you would see I'm having a different table now. Stripped mean one row color is different from other one, and if I will put my third row then it would be different from the second, and it would be similar like the first one. Now like if I'm gonna make my table dark, so I would just put a table dark. So do not worry about the sequence, because sequence matter नहीं करता, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, but the first thing should be the first one, ठीक है। बेसिक टैग उसका जो क्लास है वो पहले होनी चाहिए। Now this is dark one. If I add some other rows, you will see here. Or if I remove the dark tag, it means you can call different tags, ठीक है। तो आपकी जो भी उसकी चीज़ें होंगी होती जाएंगी, और इवन यू डोंट नीड टू राइट द कोड्स बाय द वे, बिकॉज आप देखिए आप यहाँ पे वेबसाइट पे आए, आपको क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए, आप फॉर्म्स के अंदर आ जाएं। आपको फॉर्म्स के अंदर ये क्या चाहिए, फॉर्म्स, ये एग्जांपल्स पढ़िए, आप कोड कॉपी करें, एंड आपको पता है HTML के अंदर फॉर्म्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट बॉक्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, और डिव का क्या मकसद होता है। यू जस्ट कैन कॉपी दिस ऑल, इवन मे बी दिस वुड नॉट बी वेरी मच familiar with you because you don't know what is this, but I'm having a complete lecture on this, how you can make your website completely responsive, because in this lecture I'm not going to talk about the responsiveness, I'm just talking about the different control, different components and different things you can just get and
copy into your website. Like अभी आपने जी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, like if you wanna add image, then you can just visit this one, content image, and you can copy the tags from this one, and now you know how you can link your image with your Bootstrap. Like just this is a source attribute of this image tag, so you have to just give your image address in this section, then you will get the image on your website. And this image would be the responsive, because you know this is something image fluid, so maybe this class from the Bootstrap and this is having some properties to make image responsive. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की इमेज डिस्प्ले करनी है. If you want to display image like this one, so this 200 mean if this image is having 200 pixel width and 200 pixel height, then this would best fit for this template. You know, everything is available here. Like if you want to display some figures in your document, like figure means this one is figure and you are having a caption here, and this one is a figure, you are having caption here, then you can just copy this code and you can change the caption from your HTML, and you can, you know, change the source of the HTML. Or if you wanna, so this is a layout. We are skipping this right now because later on I will discuss with details, because we are having a great lecture on grid and some indexing and columns, so don't mess up with this. But for forms you are having lots of things. Like if you wanna get a radio button, look, this is a nice checkbox. Maybe if इससे पहले आपने इतना अच्छा checkbox ना देखा हो. If you wanna do something like this one, and you just can copy this one and put into your HTML. And if I visit the components, I wanna button groups, then I can copy this one. Like if I copy this one and put into my, let me remove this one, hold on. You can put all the things, but I don't wanna create mess in my page, so that's why so this is C. And now you have to change the names, maybe. So lots of questions were in the class, because you were in the last lectures you were not able to display the buttons in the line, so now we are capable of doing this finally. This is just a beauty of our Bootstrap. Now if you want to display any card mean in the HTML CSS we developed a Amazon card, but that was so hard. You can just copy this one now, and I put this code in here, and now I just change the link of, let me show you this one, see. And if I change the link of an image, let me find an image from my let me download an image from the internet. And let me put this in my test. I name it test, and I call it here, and I refresh my website, so you would see this is a beautiful card. So we are having lots of examples from the cards, so you can just scroll it down and you can get your one. Like if you want to display crucial means and images and sliding images like this one. See, this is a beautiful, you know, just copy this code and put into your HTML document like this one. Now change the images URL. Like if you want to display first image, then you can give the first image address here, the second image address here, and third image address here. If you wanna display more images, just copy it and paste it, because you know this is something you already know. Well, these are the classes belong from the Bootstrap. Active mean the first one, and these are the other ones. So just copy paste and you can increase the number of images. See, this is quite nice now. See, and if you want to display some text on your crucial, so it's up to you how you pronounce it, because I'm very bad in this. So simply, now if you want to make a close button, you can make a close button like this one. If you want to make a navigation bar, so this is interesting thing, you are going to, like, let me copy this one, and this is navigation bar, and I'm going to copy this into my website. And now if you want to make some changes, like if you want to make it for your purpose, like you want to display your website name or some other titles here, then you can simply change, because you know the HTML, and everything belong from the HTML. You know about the LI, you know about the A,
but we are having just extra thing, the classes. These all the classes are belong from the Bootstrap, so don't just play with those classes, otherwise everything is belong from HTML. And you guys are, I think, quite smart and you have a good practice on the HTML and you can make the simple changes. So I'm not expecting too much from you, but this is the simple thing you can make very easily. Now let me save it and let me refresh it. Now we are having a drop down. If you want to convert this drop down for your purpose, then you can simply change the HTML, and I inspect it and you would see this is responsive. Even see, this is the responsive navigation bar got changed. Okay, so this is again interesting thing. We are here having you can have a lots of example of navigation bar. If I scroll it down, you would see we are having different colors, so it would give you an idea how you can change the colors maybe. Okay, so this is about this navigation bar. Okay, let me show you other important things. Progresses, if you want to show progresses on your HTML, then you can. If you want to display something like this one, see, if I click on this, it's expanded itself, and if again I click on it, it hide that content. So this is the toggle property. So if you can make things like this, so everything is available on the website. You don't need to write the code, but you just need to copy the codes and put into your HTML, and that makes some simple HTML changes. Because you know what the changes someone can expect from you, the contents. Like if you are developing a website for your customer and he asked you to do something like this, and he's having his own content in this, then what you can change simply this content with from the HTML. Okay, so models are important and quite interesting. It would make your website like this one. Like if I click on this, and it will show me like this. This is called model in the web development. Like if I drop it down, you would see lots of other models. Like this one is a large model, this one is a small model, and this one is a very small model. So here we have some badges. If you want to display the things like this, like if you see if you visit the Facebook, so you would see the example of badges. Like if you are having some notifications, if you are having some messages, so badges are used for this purpose. Like if you want buttons, then we are having different examples of button. Like these are some basic colors provided by the Bootstrap, but if you want to make your own color, then you can make your own color, because you know how you can add background color or how you can add the text color using CSS. And here we have some other things like utilities. So just skip this, only cover the components, all the components. Just try once. Tooltips, you know, I don't want to go into the details of everything, because everything is mentioned on this website, and even the examples with codes are given, so you just need to copy and paste into your. So you have to try all of the stuff from the component section and the form section, and maybe some content section. Okay, typography means the fonts. If you want to change the font family, if you want to change the font style, then you can use the typography section of this website, and you can try different things like this one. Okay, so this is the first task, and this is the first thing for you guys in this week. Just try with this all the stuff in your website. So this is basically assignment for you people. Make different sections in your web page, and try all these stuff from the contents, forms and components into a single page and upload on the Google Classroom. So this is kind of initial thing you have to do. Then in this next lecture, I would give you a complete tutorial on how making your website responsive, and in that section we would cover this grid, and this is the most hard. You can consider it hard, because in this section we don't had anything to write, because we just copied everything in our page. But in this grid we are going to, you know,
write some things in our HTML, like you have to know some basics of making website responsive, but this is not that hard. But as compared to the previous things we have done, it's a little bit tricky maybe. So I think this would be a very interesting, and even if you understand this lecture, in the future lecture we are having on the Bootstrap grid, you would be a complete responsive front-end website developer. And this is, I think, enough for being a first semester student in computer science. So that's in this lecture, and take care. See you in the next lecture.